Okay, so हमें 2019 we are going to start 2019 May June variant 22. Question number 1, methyl propane. Here we have the formula, structural formula is an isomer of butane, and here we have its structural formula. Explain why methyl propane and butane are a pair of isomer. So the answer is just simple as a definition, that same molecular formula but different structural formula, right? Identify the type of isomerism shown by methyl propane and butane. So if you draw methyl propane, in a methyl propane, carbons are like this. So And structural isolation. okay, but if we will talk more specific in structural, then which kind of isomerism is it? Which type of structure? We call it chain isomerism because one have a 3 carbon longer chain and the fourth one is a branch and the other one have a 4 carbon long chain. So it's a chain. So एक branch था और दूसरा क्या हाँ, होता है? तो ये टाइप क्या कहलाती है? चेन आइसोमेर ये कहलाते हैं. Okay, now B part. When a sample of butane is heated to 373 Kelvin in the presence of a catalyst and allowed to reach equilibrium, the following reaction occurs. Okay, state and explain if the effect on the composition of this equilibrium mixture when the temperature is increased to 473 Kelvin. Okay, so temperature is raised by 100 Kelvin and the reaction is exothermic. So remember that increase in temperature favors endothermic reaction. Okay, increase in temperature always favor endothermic reaction. So if the delta H value is negative, which means our forward reaction is exothermic and the backward reaction is endothermic. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it means they are talking about the composition. So if we talk about the composition, we can say as the forward reaction is exothermic. So what will happen to the equilibrium position? Backward reaction is endothermic, equilibrium shifts to the left, which means that the amount of methyl propane is our product, right? So the amount of methyl propane decreases. Is this understandable to everyone? Yes. Yes, sir. Okay, if anybody have doubt, do ask me. Okay, now 1 mole of a butane gas was added to 1 dm cube closed system at a constant temperature and pressure. The amount of butane and methyl propane was measured at regular
time intervals. And here we have a graph. Label the graph with the italic T to show the time taken to reach the dynamic equilibrium. So it is basically where both the lines become horizontal. So it must be this point, right? If you see at this point, both the lines are horizontal, so I can label this point as a T. जी ये clear है सबको? Yes, sir. Yes. Okay, now what else they are asking in the next part? Use this graph to find the concentration of butane and methyl propane in the mixture at equilibrium. So if we talk about this one, this is the curve for butane because butane is our reactant, right? Here in the equation. So its amount gradually decreases as the reaction proceeds. And this curve is for cyclopropane, which is our, not cyclopropane, methyl propane. As methyl propane is a product, so its amount increases as the reaction proceeds. Is this clear? So if we look over here, this curve represents the amount of or the concentration, its amount in moles of butane. So at equilibrium, there are 0.3 mole per dm cube of butane are present. These are the moles, but if you look over here, the volume used is 1 dm cube. So it means if the volume is 1 dm cube, so if we have to convert the moles into concentration, we will divide with the 1. So whenever there is a volume and that volume is in 1 dm cube, then the mole is always equals to mole per dm cube. Is this clear? Yes, is this clear to everyone? Yes. Okay. Now, if we look at the amount of cyclobutane, so these are 0.7 mole per dm cube. जी, ये दोनों clear है सबको? Yes, sir. Okay. Yes. Write an expression for Kc for this reaction. So Kc is equals to concentration of product, which means the concentration of cyclopropane, right? So the cyclopropane will be this divided by the concentration of, not cyclopropane, it's methyl propane divided by the concentration of butane, and it's like this. Is it clear to everyone? The Yes, sir. Kc, calculate the value of Kc. We know the concentration of both the reactants and product at equilibrium. So the product concentration is 0.7 and the concentration of reactants of the reactant at equilibrium is 0.3. So we have to just divide them. So what will be the answer if you divide both of these values? 2.3. 2.3. Okay. What will be the unit over here? No units. No units. Very good, because in the numerator we have a 1 concentration, so mole per dm cube, and in the denominator we also again have a 1 concentration, so again mole per dm cube. So we cancel out both, and I will write there will be no unit. Is this clear? Yes. Yes. Okay. Now, question number 2.
Group 17 elements commonly referred to as halogens. State and explain the trend in volatility of chlorine, bromine, iodine down the group. So when we look them down the group, so if you recall their states, chlorine is a gas, bromine is a liquid, and iodine is a solid. First, we have to explain the trend. So if the chlorine is a gas, bromine is a liquid, and iodine is a solid, so it means as we move down the group, volatility decreases. So we have stated the trend. Is this clear to everyone? Yes? Yes. Yes. Okay. Now we have to explain why this happens. So first we can state that there are induced dipole temporary dipole forces between halogen molecules as we move down. Number of electrons increases, which leads to increase in intermolecular forces. Is this clear to everyone? Yes, sir. Okay. Hydrogen gas. Whenever they say hydrogen gas, it's a diatomic one. H2. Reacts with the different halogens under different conditions. State the conditions required for the chlorine to react with hydrogen at room temperature. Yes, can anybody tell me which conditions are needed at room temperature to react a chlorine with the hydrogen? So if there is a, remember, room temperature and we need to react with the chlorine with any other gas like we do in the organic with the methane, we need a ultraviolet rays or UV light. So the answer will be UV rays. जी ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. On heating, iodine reacts with a hydrogen in a reversible reaction. If the equation for this reaction include state symbols. As we know, all the halogens are diatomic and hydrogen is diatomic as well. So H2
plus I2 reversible arrow N2HI. ठीक है, ये क्लियर है आप सबको? Okay, they ask you to state the state symbols as well. So hydrogen is a gas as we are heating. So iodine easily sublimes, so it is also a gas, and the hydrogen iodide that form is also a gas. Is this clear? So iodine solid neutron. Yes, but we are doing the heating, right? Iodine is solid at room temperature. But if we are providing a heat, it means that the temperature is higher than the room temperatures. And if the temperature is higher than the room temperature, the iodine doesn't melt, it undergoes sublimation, which means it directly converts into a gaseous state. So at a temperature higher than the room temperature, the state of iodine must be a gas. Is this clear? Okay. Hydrogen chloride reacts with water, and here we have an equation. In this reaction, one of the reactants behave as a Bronsted-Lowry acid. What is meant by the term Bronsted-Lowry acid? So we can just say Bronsted-Lowry acid is a proton donor. Is this understandable to everyone? Sir. Yes, sir. Identify the reactants behaving as an acid and its conjugate base. So if we look at both of the reactants, this one is the one which is behaving as an acid because it is forming a chloride ion, which means it is losing the hydrogen, donating the hydrogen. So the acid must be HCl, and after when the hydrogen is lost, the remaining is the chloride ion, which is your conjugate base of that acid. Is this clear to everyone? Yes. Yes. If anybody have doubt, kindly ask. Name the type of bond formed between hydrogen ion and H2O to make H3O positive. So when we talk about H2O, they cannot form a covalent bond because they have a maximum number of covalent bonds in it. But oxygen have a lone pair, so it provides its lone pair to form a bond with the hydrogen ion. As a result, we will get H3O positive ion, and it indicates that in the H3O positive ion, when the H3O positive ion is formed with the combination of a H2O and H positive, which bond will form? Dative bond will form, or coordinate covalent bond will form. Is this clear? Yes. Yes. Okay. For H3O positive, predict its shape and the hydrogen oxygen hydrogen bond angle. So if we look over here, what we can conclude that there are two bond pairs and three bond pairs and one lone pair. So whenever in any species, when the central atom is forming a three covalent bonds and have a three bond pair or shared pair and one lone pair, then in that case, the shape is always trigonal pyramidal. Is this clear? Yes. And if the shape is trigonal pyramidal, then in that case, the bond angle is 107 degrees. ये भी clear है सबको? Yes, sir. Sir, question में H3O
की शेप बतानी थी और OHO बॉन्ड का एंगल बताना था, तो वो फिर OHO बॉन्ड बेंट शेप हुई तो वो 180 डिग्री नहीं होगा? सॉरी, OHO बॉन्ड नहीं, HOH। हाँ, तो अगली जी बात आप बोलें, क्या कह रही हैं? जी, तो वो बेंट शेप हुई ना? देखिए, बेंट शेप एंगल होता है वाटर में, वो सॉरी मॉलिक्यूल की शेप बेंट होती है। ये देखें, here we have a water, right, where oxygen have a two lone pairs, and here we have a hydronium ion where oxygen have a one lone pair only, right? यस So in both the cases, if you look, the bond, the angle is between hydrogen, oxygen, and hydrogen, whether it's a water or a hydronium ion, right? यस So, but when if the bond are in water, then due to the two lone pairs and two bond pair of water, the bond angle will be 104.5 degrees. But when we are considering the same bonds in a hydronium ion and it have a one lesser lone pair than the water molecule, so its bond angle must be 107 degrees. ओके सर। And due to the three bond pairs and a one lone pair, its shape will be trigonal pyramidal. And when we talk about water, as there are two bond pairs and two lone pairs, then the shape is bent. ओके Shape is सर। for the whole molecules, and the angle is for the distance of the two bonds. Is the angle? Is this clear? यस Okay. Now, question number 3. Period 3 elements react with a chlorine gas Cl2 to form chlorides. The table shows the difference in observations which occur when two period 3 chlorides are added to water. Okay, so when we added a sodium chloride, what will happen? White solid disappears and a colorless solution is formed, and that colorless solution have a pH of 7, which indicates that it is a neutral solution. When a silicon 4 chloride is added to our water, we will observe a pale yellow solution, bubbles form, and test tube feels hot, means the reaction is exothermic and white precipitate form. And as they have given us the pH of that SiCl4 when dissolved in water, which indicates that it is acidic. Is this clear? यस यस Okay, now write an equation. Write an equation for the reaction occurring when SiCl4 is added to cold water, include state symbols. So when SiCl4 reacts with water, then we will get SiCl4. No, sorry, when we will get SiO2. Okay, what is the state of SiCl4? Remember, SiCl4 is a liquid. H2O is a liquid, and we will get SiO2, which is have a giant structure, so it's a solid. Along with that, the hydrogen HCl. from water, yes, very good. HCl will form. And how many moles of HCl will form? 4, because there are 4 chlorine. And to balance the oxygen, we will put 2 as a coefficient of water. Is this clear? यस Yes. Okay. Name the type of reaction
occurring when SiCl4 is added to water. Ignore the exothermic endothermic nature of the reaction. So they ask you the type of the reaction with the exception of exothermic and endothermic. See, when we are adding the water, the silicon chloride is, broken down into silicon and chlorine, and then that silicon and chlorine reacts with the water and hydrogen. So it means that whenever a molecule is broken down into a simpler one by the addition or a reaction with water, then that reaction is considered as hydrolysis. So the type of reaction is hydrolysis. Is this clear? Yes. Yes. Okay. Explain in terms of bonding why NaCl and SiCl4 behave differently when added to water. Yes, we are observing a different reaction over here. So we can answer this that we can by stating that it is due to the nature of the bond. So we all know that sodium chloride is an ionic compound, but SiCl4 is covalent. So it must be a simple molecule and there will be a weaker attraction. That's why they both have a different uh, reactions with water. ये clear है सबको? Yes, sir. Yes. Okay. Explain in terms of electronegativity why the bonding in NaCl is different from the bonding in SiCl4. And you have to explain this in terms of electronegativity. So we can say the electronegativity difference between sodium ion and chloride ion is greater than the electronegativity between silicon and chlorine. Is this understandable to everyone? अगर किसी को कोई doubt है तो please clear कर लें. जी ये clear है सबको? Yes, sir. Sir.
Yes, sir. जी okay. Chlorine dissolves in cold water and reacts with it. Here we have a equation. Identify the oxidation numbers of chlorine in each of the chlorine containing identify the oxidation number of chlorine in each of the chlorine containing species in this reaction. So the first one is the element, and the element have no charge or no oxidation number. So here I will write 0. Then the oxidation number of chlorine. Chlorine is bonded with the HCl. Hydrogen have a +1 charge and chloride have a -1 charge. So the oxidation number of chlorine is -1. Is this clear? Yes. Yes. Okay. Then we have a HClO. If you work on HClO, you will find the charge of oxygen is 2. The charge is 2-, which means H and Cl have a positive charge. Hydrogen You said -1. positive one. In HClO, the sum of charges is -2. Oxygen have a -2 charge, hydrogen have a +1 charge, which means chlorine have a +1 charge over here. So the answer will be +2. ये बात clear है सबको? सर इस पूरे एलिमेंट कंपाउंड पे -2 चार्ज होता है। जी सर, नहीं, -2 कैसे? सॉरी 0 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन और क्लोरीन पे क्या हो गया मुझे +2 +3। चार्ज होगा। और अगर हाइड्रोजन का +1 है तो क्लोरीन का चार्ज भी +1 होगा, जिसकी वजह से +2 हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन का कलेक्टिव चार्ज। ठीक है सर जी। जी किस क्लियर है या दोबारा रिपीट करूं? नो सर। देखें, HClO पे कोई चार्ज नहीं था, इसका मतलब है उसका चार्ज 0 है। ऑक्सीजन पे -2 होता है तो -2 आ जाएगा, तो इसका मतलब है HCl पे यहाँ पे क्या चार्ज होना चाहिए? हाइड्रोजन और क्लोरीन का +2। ये बात क्लियर है? यस सर। ओके तो +2 अगर दोनों का कलेक्टिव चार्ज होना चाहिए तो हाइड्रोजन का अगर +1 होगा तो क्लोरीन का भी +1 होगा। सर तो HCl में क्लोरीन का चार्ज क्या है? +1 है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं तो कौन सा रिएक्शन होगा भाई? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस। मगर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इस रिएक्शन में क्लोरीन पे 0 चार्ज है और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं उनमें से एक कंपाउंड पे -1 चार्ज आ रहा है क्लोरीन का और दूसरे आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, हो गया। सर रिडॉक्स रिएक्शन। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। हाँ तो एक क्लोरीन -1 में भी कन्वर्ट हो रहा है और वही क्लोरीन दूसरा क्लोरीन का आइटम +1 में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन भी करके रिड्यूस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज भी करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये बात क्लियर है? यस। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर। तो इस रिएक्शन को हम क्या नेम देंगे? Disproportion. वेरी गुड, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे आंसर हाइड्रोलिसिस लिखते तो वो नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में सिर्फ ब्रेक होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। ठीक है, ये बात क्लियर है?
Yes, sir. Okay. Explain why chlorine is used in the purification of water. जी क्लोरीन को क्यों यूज करते हैं? सर क्योंकि HClO एक insoluble compound होता है, वो नीचे बैठ जाता है, उसके बाद उसे ठीक है. filter out कर लेते हैं. Why chlorine is used in the purification of water? तो बेसिकली ये क्या करता है? It kills तो बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है क्लोरीन. जी यहाँ तक क्लियर है सबको? Sir, Yes. ओके. A mixture of HCl and HClO is added to cold dilute NaOH. One of the product behaves as a bleach. Suggest the equation for this reaction. जी इससे ऊपर तक सबको क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. ओके. किसके रिएक्शन की इक्वेशन हमें दिखानी है? HCl plus HClO. अच्छा जी, तो इस रिएक्शन की हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? HCl और HClO को जो है रिएक्ट कर रहे हैं और एक मिनट, HCl है और HClO है. Sir, NaClO product होगी. जी बिल्कुल होगी. और ये रिएक्ट किससे कर रहा है? NaOH से. तो आपको एक प्रोडक्ट क्या मिलेगी? NaCl. दूसरी प्रोडक्ट क्या मिलेगी? NaClO. और HCl से रिएक्ट करके NaCl और NaClO फॉर्म कर रहा है. और इसके साथ क्या फॉर्म होगा? NaClO3 फॉर्म हो रहा है along with 2 moles of water. जी ये क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, Sir, sir. इसके अंदर हम लोग accuracy कैसे accurate कैसे equation बना सकते हैं? इस पार्ट में पे ये वाली इक्वेशन जो है ये हमेशा एक्यूरेट कैसे हो सकती है? मतलब कोई तरीका ऐसा हो सकता है कि वैसे तो इक्वेशन हम मेमोराइज करते हैं, राइट? लेकिन ये वाली एक हाँ ऐसी इक्वेशन थी जो आई डोंट नो, मैंने आज तक नहीं देखी थी इस तरह की इक्वेशन. ठीक है, देखें. उसके कैसे करते हैं? एक मिनट. आई थिंक मेरी स्क्रीन अनशेयर हो गई है. लेट मी शेयर इट अगेन. देखें ये इक्वेशन आपने नहीं देखी, मेरे ख्याल से बाकी सबने भी नहीं देखी होगी क्योंकि ये इक्वेशन सिलेबस में नहीं थी. बट अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो ये क्वेश्चन जहाँ पे स्टार्ट हुआ था,
अच्छा, ये देखें, ये कह रहे हैं कि क्लोरीन डिजोल्व इन अ कोल्ड वाटर एंड रिएक्ट विद इट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो आपके सिलेबस में होगी, आपके नोट्स में भी होगी, राइट। फिर हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, फिर हमने देखा कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लोरीन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। अच्छा, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं कि HCl और HClO के मिक्सचर को हमने कोल्ड NaOH में ऐड किया है। तो कोल्ड अगर NaOH यूज किया है तो इसका बिहेवियर कोल्ड NaOH का वाला ही बिहेवियर होगा ना, जो कोल्ड NaOH का होता है, यानी कि जो डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस कर देता है, और Na जो है उसकी जगह ले लेगा किसकी? दोनों में हाइड्रोजन्स की। ठीक है, यस सर। तो हमने दोनों जगहों पे Na को डिस्प्लेस कर दिया, Na की जगह हाइड्रोजन आ गए, तो ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हुए हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे? 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म कर लेंगे। ये बात क्लियर है यस सर। जी? बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। सर आपने ओके, कहा कि ये इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बुक में तो मेंशन है। ये वाली इक्वेशन नहीं है बेटा बुक में। लेकिन दूसरी वाली है जो देखिए, बुक NaClO में, वाली। हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्या इक्वेशन जो बुक में मेंशन है। वो बुक में दो रिएक्शन मेंशन है कि क्लोरीन विथ कोल्ड dilute NaOH and then chlorine with, अच्छा, ये ऊपर वाला रिएक्शन 15 30 to 15 to 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और क्लोरीन विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जो कि अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्लोरीन को रिएक्ट करवा रहे हैं किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्लोरीन जो है बेसिकली एक NaCl फॉर्म करेगा, एक NaClO फॉर्म करेगा, और उसके साथ क्या फॉर्म करेगा? वाटर। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा। तो देखें, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। जी सर। अच्छा, जब हम हॉट कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में NaCl कोल्ड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है, तो NaClO3 फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। ये बात क्लियर है सबको? यस। यस। ओके, तो ये वाली दोनों इक्वेशंस आपके पास सिलेबस में होंगी। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्लेस करूंगा। नहीं, इस तरह हमारी इक्वेशन तो बैलेंस नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? अब क्लोरीन यस। पे देखिए, यहाँ पे 0 चार्ज है, इस क्लोरीन पे -1 चार्ज है, और इस क्लोरीन पे +5 चार्ज होगा। ये बात क्लियर है? यस। बाकी सबको भी क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब देखें, क्लोरीन पे +5 चार्ज आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब है इस क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। और अगर हम इस क्लोरीन को रिलेट करें इससे,
ओके, तो यहाँ पे ये क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, 0 से +5 में जा रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे और 1 मिनट। ठीक है, जब क्लोरीन +5 में जा रहा है तो इसका मतलब है ये 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और क्लोरीन विद NaOH and NaCl NaCl+H2। अब अगर क्लोरीन जिसका 0 चार्ज है वो अगर यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 5 हो जाएगा और ये वाली स्पीशी भी 5 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? यस 5 से मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि दोनों तरफ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन भी हों। ठीक है, क्लोरीन विद NaOH NaCl NaCl। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। Okay, so probably tomorrow is a Friday and I don't think that I am able to take the class on Friday, but I will try my best. ठीक है?